I want our audiences to know आपकी जिंदगी की मंडेन चीजें कौन सी हैं? बताओ। मेन्यू बनाना। आज क्या खाना, आज खाने में क्या है? कोई वो मुझसे ले ले, मैं तलवार लेके बाहर उतरने को तैयार हूँ। मेरे को कौन सी भाजी बनानी है दिन में वो मत पूछो। ऐसा नहीं है कि मुझे तिरस्कार नहीं मिला है। गे प्राइड मैंने इस टाइम फ्लैग ऑफ किया था। जी जी, काफी ट्रोलिंग हुई है मेरी। इट हैज मेड मी मोर डिटरमिन्ड कि ये जो माइंडसेट लोगों का है उसको बदलने का समय आ चुका है। What we need is strong women with a strong voice to instill confidence in society. midday.com is today at Lakshmi Vilas Palace, Vadodara, Gujarat. We are going to meet Maharani Radhikaraje Gaekwad, the Maharani of Baroda. As a Maharani, she is doing very interesting work. She is working with the marginalized of the society, trying to make a change, one at a time. Let's talk to Maharani Radhikaraje Gaekwad. Maharani Radhikaraje Gaekwad. Before we started this interview, we were talking and I told you that जब हम पहले लिखते थे, हम साम्राज्ञी लिखते थे. It's more than a decade, that you have been on the seat of Maharani. As a woman, क्या बदला आपके लिए और जो 10 सालों में आपने काम किया, जिस तरह से एक आप उभर के आई हैं, आप बहुत कुछ कर रही हैं आर्ट और कल्चर को लेकर, LGBT कम्युनिटी को लेकर, तो ये फर्क कैसे और क्यों और कितना मुश्किल था, स्पेशली व्हेन यू बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली? मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा ऑनेस्टली, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहा है और इस शहर में गायकवाड़ परिवार के प्रति बहुत ही आदर है लोगों का। तो जितना भी अनकन्वेंशनल मेरा जर्नी रही है अभी तक, लोगों का साथ रहा है। एटलीस्ट मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसा नहीं है कि मुझे तिरस्कार नहीं मिला है। जैसे कि मैं जब गे प्राइड मैंने इस टाइम फ्लैग ऑफ किया था, जी जी, तो काफ़ी ट्रोलिंग हुई है मेरी। चलिए, बिल्कुल। और पर उससे मेरा निश्चय और दृढ़ हुआ है। इट हैज़ मेड मी मोर डिटरमिन्ड कि ये जो माइंडसेट लोगों का है उसको बदलने का समय आ चुका है। काफ़ी समय से आ चुका है, हाँ, पर अब it makes you more determined that there needs to be change. So I don't look at criticism as something to shy away from. I look at it as very, very objectively. And very often criticism it is also the compass which guides you. Maybe you are going off track. And sometimes it tells you, yes, this is where you need to focus on. पर मेरे को platform हमेशा एक मिला है. So I can't say from the start everything has been a struggle. I have always been welcomed to bring in that perspective, that effort to change, and it comes from the family. वो पूरा trickle down effect है, क्योंकि over the generations ऐसा एक संबंध बना है राजा प्रजा के बीच कि उसका मैं अभी तक मैं उसका फायदा ले सकती हूँ और उसको responsibly आगे बढ़ा सकती हूँ. And my mother-in-law is very supportive. My husband is very supportive. Otherwise, as a woman, you would know, अकेले बढ़ने में आपत्ति आ सकती है, लेकिन आपका परिवार का अगर पहले वही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट रहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं. Very interesting. I was just going through some of your interviews where somewhere you said that when especially आप जब एक रॉयल फैमिली से होते हो तो लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं, लोग चाहते हैं आप दायरे में भी रहें. बिल्कुल. तो आपने बहुत क्लियरली कहा कि फैमिली का बहुत सपोर्ट था और सपोर्ट है, लेकिन जब पब्लिक आई में आप जाते हैं तो क्या ऐसा you constantly have that thing at back of the mind that yes, I have to remember that I'm not just a woman of substance but I'm also a Maharani. वो एक टैग जो होता है रॉयल फैमिली के होने का, उसका कुछ that feeling, that undercurrent feeling वो रहती है क्या? कुछ सच बताऊं, थोड़ा तो रहता है. एक्सपेक्टेशन लोगों का रहता है कि वो आप जब आपको मिलते हैं तो देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रीकंसीव्ड नोशन. लेकिन आई थिंक मेरा जो जन्म हुआ है ऐसे ही परिवार में हुआ है और मेरा एक बैलेंस्ड परवरिश रही है जहाँ पे रॉयल बैकग्राउंड की भी मैं बिलोंग करती थी और द सेम टाइम आई हैड अ वेरी वर्किंग क्लास अपब्रिंगिंग. तो वो बैलेंस रहा है, तो वो कुछ स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का ऐसा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है. सो माई पर्सनैलिटी इज बोथ, सो it's very easy to blend in both. मेरे को really कुछ ऐसा स्पेशल रोल करने का नहीं लगता है. हाँ, लोगों को जो कंसेप्शन होता है वो मैं एकदम सामने आ जाता है जिस
वे दे विल अप्रोच यू. कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव भी होता है. नेगेटिव इन द सेंस कि मतलब कि ये क्या जानेंगे हमारी प्रॉब्लम्स, ये हमारी समस्या क्या समझेंगे, ये महलों में रहने वाले क्या मतलब हमसे बात करेंगे कि नहीं, कि वो हमारा मतलब विल दे रियली अंडरस्टैंड हमारी क्या तकलीफ है. सो बट दैट इज वेरी क्विक टू, because our society is judgmental. It is judgmental, but I think if you sit down and have a conversation, then that I think even I'm pleasantly surprised, and I hope they are too. How beautiful, how beautiful. I remember शुभांगिनी जी राजमाता, वो चंदेरी वर्कर के साथ काम करती थी. हमने इस पैलेस में भी बहुत सारे एग्जीबिशंस कवर किए हैं, और आपने बहुत नए मुद्दों को भी उठाया, काम करना जो शुरू किया. तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहेंगे कि आई वांट टू नो फ्रॉम यू, नॉट जस्ट एज अ वुमन बट एज समवन हु is called Maharani, that label is always there. तो कैसे डिसाइड किया वो कि इन मुद्दों पे काम करना है, या ये चीजें हैं जहाँ पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? आई थिंक आपको बेसिकली कान और आँख खुले रखने, बिल्कुल, और अपना मन के कान और आँख खुले रखने. सो यू हैव टू नो व्हाट यू वांट एंड व्हाट सोसाइटी नीड्स. आई थिंक वो अलाइनमेंट हो ना, तभी कुछ आप कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुद्दे हैं सोसाइटी में, पर अगर आपको दिल से नहीं छूते हैं, देन यू आर डूइंग लिप सर्विस. और काफ़ी चीज़ें हैं विच आई एम पैशनेट अबाउट, बट दैट इज़ नॉट द नीड ऑफ द आवर और व्हाट सोसाइटी नीड्स. सो अगर वो अलाइनमेंट आ जाए, सो यू हैव टू बी ओपन टू योर इनर वॉइस, what you really moves you, as well as what society needs. And if you find that balance is when you can really be a catalyst. और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड उसमें अड़चने आएंगी, आती हैं मुझे भी. जैसे कि जब मैंने LGBTQI कम्युनिटी को स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के तौर पे संस्था में लेना शुरू किया, पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, क्योंकि किसी को हमने पब्लिसाइज किया ही नहीं. इट वाज नॉट अ पॉम्प एंड शो, कुछ हमें पब्लिसिटी चाहिए नहीं. लेकिन जैसे कि ये बात फैलती गई कि स्टूडेंट्स और टीचर्स आर वेलकम ऑफ द कम्युनिटी, धीरे धीरे द गर्ल्स स्टूडेंट्स और विमेन स्टूडेंट्स कम होने लगे. पर सेम टाइम पे जब हमने गरबा किया, फर्स्ट इंक्लूसिव डांस रिलीजियस डांस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड हमने जब किया, जो रिस्पॉन्स हमें आया, क्योंकि हमारे ट्रांसजेंडर्स हमारे मंदिर को संभाल रहे थे, हमारे वॉलंटियर्स थे. आई हैड किन्नर समाज के पीपल इन द ऑन डांसिंग गरबा विद ऑल ऑफ अस, और उसको इतना अच्छा एक रिसेप्शन मिला. पीपल रिसीव्ड इट सो वेल, और एक परिवर्तन आया लोगों के मन में. और वो इसलिए आया क्योंकि अगर आप जैसे अगर कोई लीडरशिप के पोजीशन में, कोई राज परिवार को घराने का कोई वो आप कोई चेंज लाए, तो सोसाइटी थोड़ा ओपन होता है. भाई रेजिस्टेंस तो आता है, पर वो प्लेटफॉर्म आपको थोड़ा, देयर इज नो, इट्स नॉट बिकॉज पीपल रियलाइज कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं है. इट्स नॉट अ वोट बैंक, यू आर डूइंग इट बिकॉज यू पर्सनली फील. ये अड़चने आती ही हैं. So it is a struggle. Any new change that you bring in, you are going to face resistance. But it is about how determined you are, and that's why it comes again to alignment of your basic integrity and your values to what you would change you want to see in society. लोगों को हमेशा एक लगता है कि अच्छा एक जो हम पहले भी थोड़ा सा इस मुद्दे को हमने छुआ कि प्रिविलेज्ड हैं, इनको क्या ही समझ में आएगा. बट जब बात करते हैं या जब आपका काम देखते हैं तो उनको रियलाइज होता है. बट आई वांट टू नो एंड आई वांट आवर ऑडियंसेस टू नो, आपकी जिंदगी की मंडेन चीजें कौन सी हैं? बताओ. मेन्यू बनाना. आज क्या खाना, आज खाने में क्या है? वर्स्ट जॉब. कोई वो मुझसे ले ले, मैं तलवार लेके बाहर उतरने को तैयार हूँ. मेरे को कौन सी भाजी बनानी है दिन में वो मत पूछो. That's so lovely. ये हमेशा एक जोक होता है कि हर घर का राष्ट्रीय प्रश्न है, और स्पेशली शाम का खाना. और आप जो भी कर लेंगे उसमें 4 लोगों के 4 ओपिनियन आएंगे. ये क्यों बना, ये क्यों नहीं बना. That's so cute. I want to ask you, there is this always एक आम जनता को एक हमेशा एक रहता है कि the blue blood and the bravery and ये वो. क्या कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में होते हैं जब आप किसी चीज को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं? कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहूँगी मैं. क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी से बढ़ जाती है कि आप पब्लिक आई में कॉन्स्टेंटली रहें, कि आप अगर आप किसी चीज़ पे आप
फोकस कर रहे हैं कि आप अगर आप किसी मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं तो जो मुद्दे से वो जुड़े हैं उन पे भी आप थोड़ा प्रकाश डालें कि उससे एक पब्लिसिटी हो जाए. सो टू पुट इट सिंपली दैट the expectation to come for functions or they events, all want you to be associated yes, with you. Yes, Whether which you- becomes very difficult because क्या हो जाता है कि अगर आप हर मुद्दे से आप जुड़ें या हर entrepreneur, women entrepreneur or creative person or whatever I personally feel और जिस ideals को मैं रखती हूँ कि अगर मैं हर person को support करने पर्सनली जाऊं या हर रिबन कटिंग को अटेंड करूं या हर फंक्शन में एक स्पीच दूं तो I would love to do it, but it's not possible because दिन में इतने घंटे होते हैं. It's humanly not possible. It's humanly not possible because I have my first job is as a mother. I have 2 young girls to bring up. So my first priority is that my job and responsibility as a functioning member, looking into different aspects of the different areas that we work in, and my own creative aspect where I personally like to work and evolve. अगर उसको मैं compromise करके, if I spend myself entirely, it's very hard to keep that balance. You have to be choosy. You can't be everywhere. Yeah. So now I want to ask you something. राजगादी संभालने की जब बात आती है हमेशा एक सवाल आता है कि आपको तो 2 बेटियां हैं अब क्या. ऐसे सवाल आए हैं, वियर्ड कमेंट्स के आए हैं और आपके क्या जवाब रहे हैं एंड व्हाट डू यू फील. You have been someone who has broken barriers. You are someone who are doing things which are not done by a lot of people, especially from the royal family. आपको लगता है कि जो एक बहुत बड़ा बदलाव शायद मैं एज अ वुमन फ्रॉम बड़ौदा देखना चाहूंगी, आपको लगता है कि उस दिशा में कहीं कुछ हो पाएगा? जरूर होगा. क्या मिलके करेंगे अपन. बिल्कुल. I think what we need is strong women with a strong voice to instill confidence in society. क्या होता है कि as women हम society में अपनी जगह clearly नहीं बनाते. We are very comfortable taking the back seat. We have capability and we have a voice and we have an opinion, but very often we let it take a back seat to allow the male voice to speak louder. And I think time has come for a change. और मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, काफ़ी हद तक मेरे में भी मन में भी ये विडम्बना थी कि I should have a boy because I come from a traditional family. It's an arranged marriage. I'm fully aware of how royal family line goes. It's from father to son, the elder son. And my husband was very clear. We have 2 daughters, we have 2 healthy children, and we need to bring them up with the kind of attention children require and the best resources we can provide. And 2 is the number we stop at. And as time has passed and as I have gravitated towards causes which are unconventional, आज मैं अगर LGBTQI community के साथ काम कर रही हूँ या I am working with women who are compromised or are not on the same footing as you and me through skill building or opportunity building. अगर मैं इन marginalized society section से काम कर रही हूँ तो क्या मैं अपनी बेटियों को ही marginalize करूँ? I thought it was very hypocritical if I'm working towards community and championing causes, believing that I'm giving them a voice, and then at my own home, I'm thinking, oh, I have 2 daughters, I need to have a son. I found that it was questioning my own integrity. So where do I belong in my own moral compass? Where do I stand? If I have 2 value systems, one to judge society, where I feel I need to bring change in society, but in my own self, in my own life, I am thinking I have to follow this tradition. So it's been a difficult task for me also to re-engineer my thinking. Re-engineer your thought process. True. It's very personal at that level that if I'm wanting to re-engineer the way the society thinks, I have to also re-engineer in my personal level certain values and notions that I have been raised with. And it's fabulous because that is self-growth. And for me to push that barrier for myself is where I see myself evolving. And there is a struggle where there is doubt within me that I hope I can, pave the path for my daughters. And that's why consciously अब मेरा ये प्रयास रहता है कि
मैं एक पॉजिटिव रोल मॉडल रहूं सोसाइटी के लिए और मेरी बेटियों के लिए, कि आज वो समझें कि रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप क्या होती है, एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी भी एक नारी को एक नेतृत्व के रोल में देखे और एक्सेप्ट करे, जिससे आगे मेरी बेटियां को एक्सेप्ट करने में आसानी हो. सो इट इज you're trying to be that person, and as a woman we manage that, right? We are playing so many multiple roles. Of course. It's just that you're doing it more consciously. बट आपको ये सवाल पूछा गया है कि आपको तो 2 बेटियां हैं, अब क्या? मतलब काफी हद तक सवाल पूछे जाते हैं. आर यू प्लानिंग टू अडॉप्ट, आर यू प्लानिंग टू, एंड एक्चुअली ये सवाल मेरे को मेरी बेटी ने पूछा और मुझे उस पे आश्चर्य हुआ. एक्चुअली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी when I sat with my elder daughter and I said, Padmaja, in our families we are supposed to have a boy, and I'm not going to have a son, I'm not going to try for a son. And she said, but Mama, I thought you will adopt. It hit me so hard, it was like a slap on my face, because मैं मेरे बच्चों को इस परवरिश कर रही हूँ. Both my husband and I, we are raising our children to be their best versions of themselves. We are raising them to be confident, secure, well adjusted in society children, and not raising them as girls, that we are raising them as citizens of this country, as children of this house. And when a 15 or a 16-year-old child is still thinking that she will be replaced by a boy, that's when it hit me. And it was not something that was ever mentioned or spoken, that there was no question of, oh, we have to have a boy or we must have an adult. There was nothing, but just because of the conventionality of how it has been in this house, and which is not what I want. I don't want my children to accept tradition without questioning it, because I'm not doing it. And so that for me was really the changing point, that if my daughter, after being as emancipated a family, belonging to as emancipated as a family as ours, can have that doubt. Look at what our girls in India are growing up with. So it's just made me more conscious of the fact that I need to change this mindset, not just for society, but even within my own house, within me and my children. Very, very interesting. Very strong. I'm visualizing that कभी एक महारानी का राज्य अभिषेक होगा. I think it's time, right? High time. We should do that. It's and I'm sure Baroda comparatively काफी cosmopolitan है. Baroda ने change accept किए हैं. Women have been in leadership position. आप देखिए, आप जमुनाबाई महारानी साहब को देखिए, आप चिमनाबाई महारानी साहब को देखिए, Marni Shanta Devi, my mother-in-law, they've all been women in leadership. आपके chancellors in this university. Chancellor, yeah, मेरी सारी degrees पे उनकी sign है. Yeah, it's fabulous. ऐसा city मैंने नहीं देखा. I have not seen a city like that. I'm very grateful to be here. I don't think, as a woman or as a royal family member, I would have been able to do a fraction of what I'm able to because of where I am. I'm very grateful for it. So, what is Radhikaraje Gaekwad when she's not the Maharani? Thinking about causes, thinking about changing her inner engineering. क्या है आपको किन चीजों का शौक है? शाम को क्या सब्जी बनानी है, वो सोचने के अलावा वो तो शौक नहीं है, वो तो काम है. बिल्कुल ही नहीं. I love spending time with my children. I'm a family person. तो मुझे मेरे परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है. I love traveling. I love music. I love spirituality. I love craft. A little bit of everything. Everything. Yeah. And you have lovely sari collection, as we know. वो तो धीरे-धीरे सालों में over time. Over the time, collect हो रहा है. You have been a journalist. Before I let you go, I want to ask you, जब आप काम कर रही थी और आज जिस तरह से मीडिया है, आपको क्या चीजें पसंद हैं और क्या चीजें नहीं पसंद हैं? मुझे क्या पसंद है मैं आपको बताती हूँ. I like how today social media it's a double-edged sword. Absolutely. But I like the fact that today there is a story that needs to be told. There is an audience for it. There is an outlet for it through social media. Because press does not have the flexibility of every story being told authentically.
or every voice being heard. So I feel that is the huge power that social media has, but I won't say that it is using it as effectively and responsibly as it should, but at least it is available as a tool. So I think that is a positive. I say I feel content creation may, and because there's so many mediums of press now, digital, print, magazine, so on and so forth, कि वो content ढूंढने में वो essence जा रहा है. You are losing the seriousness of certain topics. You are focusing on what will catch eyeballs. Stories are not well researched, and there's no responsible journalism. I feel that is being compromised in creation of content. And लोग पढ़ते नहीं हैं. They want short, सब कुछ एक quick summary में चाहिए उन्हें in terms of news. Attention span नहीं. Attention span. So everything cannot be explained in 5 lines. Few minutes. So what next? आप नया क्या करने जा रही हैं? अभी तो हमारा working on starting a cafe in Maharani Chimnabai Sri Udyogalaya, which is will be run by the LGBTQI community. We want to give them a platform where they are viewed professionally as at an equal footing, a platform and equal footing. Or I feel that is going to help change the mindset, because जब हम queer community की बात करते हैं, you see them in very typecast roles. एक तो films have done not helped in creating caricatures of the community, and then आप टोल नाके पे देखते हैं और you see them, आप शादी में आपको दिखते हैं या transgenders दिखते हैं, तो आपका mindset कि आप उसी एरिया में उनको, तो अगर आप उनको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे देखें, आई फील माइंडसेट तब चेंज हो सकता है. क्योंकि मैंने ये देखा है, क्लासरूम में देखा है, मैंने गरबा में देखा है. आई थिंक देयर, आई बिलीव इन द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, बट क्या होता है कि व्हेन यू आर इल इन्फॉर्म्ड एक मिसट्रस्ट आता है. सो अगर आप, इफ यू कैन डील विद दैट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, दैट मिसट्रस्ट कैन गो. So that will be your next. That is what I believe. Project. And agar there is an economic exchange between these communities and other communities, there will be a balance and a more composite fabric that can evolve. Patriarchal society है हमारी in general, और रॉयल्टी में तो बहुत बंधन होते हैं. गायकवाड परिवार की बात करें तो वो तो पहले से ही बहुत ही एडवांस, वेरी मॉडर्न रहा है. बट what will be your message to those people who maybe belong, who are from the royal family, and maybe they have a different mindset, want to do more, but that patriarchal pressure is stopping them? What will be your message to those girls, those women? I think आपको change लाना है ना, तो you have to do it very respectfully. You cannot be unilateral in your decision. I've realized आपको किसी भी जगह में, आज मैं भी अगर पहले ही दिन से अपना धरना चालू कर दूं या अपना मोर्चा चालू कर देती यहाँ बड़ौदा आके, इट्स यू हैव टू फर्स्ट, आपको एक जगह में सेटल होना है, परिवार को समझना है, अपनी जगह बना लेनी है उसमें. अगर आपके एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है परिवार के साथ, आपके जो इमीडिएट समाज है उसके साथ, फिर आप धीरे धीरे परिवर्तन ला सकते हैं. क्योंकि यू कैनॉट हैव ब्रिंग चेंज or bring harmony in society if there is no harmony in your own home. Then you have to take the conscious decision that I live on my own terms, I live and do things on my own. You cannot be trying to live a conventional life and then, because that is, you're causing friction. Not going to work. Yeah, this is my personal view, that people do it differently. I can only speak from my personal experience. You have to understand people, and that's, as a woman, I think, at least as a woman of India, as a woman who's grown up with very conventional values, that's what I've understood, that you kind of, there is an understanding individually with every member it's a give of and the family. Take. Yes, there is a give and take, and then you can further give and take. Maharaj Sahib to bahut, he's there in public eye but still not there, so people don't know him a lot. People who have not met him or don't know a lot about his work, tell 3 things about him that people don't know. Actually, he's the guy who keeps this going. Honestly,
He doesn't like to be in the limelight, but everything you see around is created and managed by him. And he takes great pride in his wife being in the limelight. There are very few men who. True. I completely agree with you. Very true. But he is the person who has the vision for the legacy and the estate, and he takes it forward. And I do my bit, and we work in different areas so that we are not doing the same thing. Yeah. And there's a beautiful understanding in that. I mean, we all need to give him more credit. It's just because he's not in the limelight. Whatever you see is created and maintained by him. Lovely. It was lovely talking to you. Thank you so much for your time. Thank you. So happy that we could meet and we could do this. Thanks a lot. Me too. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.